The dismantling of two hotels tilting dangerously towards each other in Joshimath, the Uttarakhand town, which is facing a massive land subsidence crisis, started today after days of negotiations. But big worries remain, including security and army infrastructure, which is there in the crucial town. So these are pictures of, from earlier in the day, where the demolition of these dangerously tilting hotels began. Many structures, as the Uttarakhand Chief Minister told NDTV, about 25% of the buildings in this temple town are suffering right now. They have developed cracks. Let's listen in to all the reports that came in through the day, sent by our colleague Saurabh Shukla. कर्जा निकाला, घर बनाया, ये किया वो किया। आदमी था जिस समय उस समय बन गया। पहले ये तो बुजुर्ग का घर है ना, पर उधर भी था तो आदमी ने कर्जा निकाला, ये किया वो किया, घर बनाया। आज बच्चे घर से बेघर होने लगे। बच्चे के पास रोजगार भी अच्छा नहीं है, खाली 10-15 हज़ार में काम करते, उसमें बच्चे पालते, घर बनाते, क्या करते ना। तो बहुत मुश्किल वाला काम हो रखा है। बहुत मुश्किल है। ठंड में होटल में भी जाएंगे तो ठंड से मेरी तो तबीयत भी वैसे खराब है। हमारा तो ना इधर है ना उधर है, एक ही तो घर है मेरे पास, क्या करूं। मेरे तो कुछ सरकार बोल रही, बोल तुम विस्थापित बनो। कहाँ बने हम विस्थापित? हमारे पास तो कहीं रहने खाने की जगह तक सामान नहीं है। विस्थापित कहाँ हो जाएंगे हम? इतने हम विस्थापित होंगे, हमारी गाय बच्ची कहाँ जाएगी? आपके गाय बछड़े वगैरह? हाँ, गाय बछड़े वाले हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। दूसरों के गांव में जाके क्या हम रोजगार कर सकेंगे? पत्थर फोड़ते हैं मेरे बच्चे, तब खाते हैं हम खाना। मैं लकड़ी बेचती हूँ, घास बेचती हूँ, तब अपना गुजारा करते हैं। अपने गांव में तो चल जाता है गुजारा, दूसरों के गांव में चले जाएगा गुजारा? नहीं चलेगा भैया। हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रही, हम क्या करें, कहाँ जाएं। आप के सरकार कह रही है वो मुआवजा देगी, 1.5 लाख रुपए मुआवजा आपके खातों में देगी। बात हुई किसी से आपकी? अभी कोई बात नहीं हुई हमारी किसी से। बस बोल तो रहे हैं पर सुनाई कुछ नहीं है। धामी साहब, अब आप सबसे मिल रहे हैं तो आपने निष्कर्ष कुछ निकाला? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यह है कि भाई सभी लोगों को सहायता होनी है, और सहायता के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रदेश हर साल आपदाओं से ग्रस्त रहता है। हमें आपदाओं से हर साल सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इस बार दुर्भाग्य से कहिए कि यहाँ पर आपदा आई है और लगभग 600-700 मकान हमारे उस आपदा के प्रभाव में आए हैं, आपदाग्रस्त हुए हैं, कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन चूँकि ये जो परसेंटेज है वो 20-25% है पूरे जोशीमठ का, और पूरी अभी इसके बगल में ओली है। ओली में अभी काफ़ी सारे पर्यटक आए हुए हैं। 4 महीने बाद हमारी यहाँ पर बद्रीनाथ, चूँकि बगल में है बद्रीनाथ धाम, और 4 धाम यात्रा इसी रूट पर चलती है, वह यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से ये बनाया जा रहा है कि जैसे कि पूरा जोशीमठ शहर डूब गया है, पूरा जोशीमठ समाप्त हो गया है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है भयंकर संकट आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस प्रकार का वातावरण बनाने से जहाँ उत्तराखंड के लोगों का तो सीधे सीधे नुकसान ही है, चूँकि यात्रा चलती है, लोग आते हैं यहाँ, और लोगों की आजीविका भी 4 धाम यात्रा से चलती है। और पूरे देश की लोगों की श्रद्धा, आस्था और मैं कहूँ कि विश्वास का ये स्थान है, पौराणिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है। तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हम आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये आपदा भी आई है। आज मैंने भगवान नरसिंह जी के प्रांगण में जाकर भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना की है कि जल्दी से इस आपदा से भी हम उभरें। सर, जो लोग हैं रात में कुछ धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो मुआवजा अभी आप 1.5 लाख आपने बोला है, जो फौरी मुआवजा है, उसको लेकर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं आप उन लोगों से? नहीं, सभी लोग अब धीरे धीरे
संतुष्ट हो रहे हैं और सभी प्रतिनिधि मंडल के लोगों से हमने यहाँ पर बात करी है और ये कोई अंतिम राहत नहीं है, ये तो अंतरिम है कि अभी लोग अपनी व्यवस्था कर पाएँ। अभी चूँकि एकदम से उनके ऊपर आपदा आई है तो अपने तरीके से अपना आगे का वो अभी फिलहाल इंतजाम कर पाएँ और आगे का हम आपदा जो राहत का जो भी सहायता राशि होती है वो सहायता राशि देंगे उनको। Let's quickly go live straight to Joshimath, where my colleague Saurabh Shukla is now with us. Saurabh, has the demolition work stopped in the night or is it continuing? That process of dismantling, Sanket, has stopped due to rain, and you can see we are in Shankaracharya temple where Shankaracharya ji meditated centuries ago, and it is all wet. It was raining. It has just now stopped, which has stopped the rescue ops as well and the process of dismantling. And this is the major worry for the administration as well, because they are still monitoring. This rain can increase the land subsidence also, so that has been studied by a lot of scientists and experts here in Joshimath. Apart from that, dismantling process will take a week. So do we have 1 week for Joshimath? We can't say, because the cracks are getting widened. We have shown the pictures to our viewers yesterday from JP's residential complex. And apart from that, JP's residential complex, there are other several places, several houses in the below regions of Joshimath. There are rooms where they have shrunk. So it is reducing. It is not reducing, it is increasing with every single movement. So that is a major cause of worry. And apart from that, if snowfall happens, there is a forecast as well regarding that. So if snowfall happens, it's going to get worse here for the people who are in camps, in gurudwaras, in hotels. And apart from that, though administration is doing the best for them, but apart from that, there are 4 to 5 people in single room. So for them also it is going to be very difficult. There are old people, there are women, there are children, there are sick people. It is going to be a difficult call for them. Apart from that, as CM Pushkar Dhami was also explaining, Joshimath is a gateway to Badrinath, gateway to Chardham as well. So the fear psychosis is there. Just above Joshimath, there is Oli hill station. People come here in good numbers for winter sports, but this time the footfall has reduced. People are cancelling their bookings, and it will affect the economy of Joshimath and as well Uttarakhand. This is also a major cause of worry. But they have announced a relief package of 1.5 lakh for every household. And the point that you have just mentioned, is it enough? Though they are saying it is interim. Sort of the point that you were just mentioning of the gaps and the cracks widening and land subsidence still continuing. It's not like it has happened once and stopped, right? There are reports from other parts of the state as well, in Karnaprayag and in other areas. Do you feel that the state government is showing the urgency that is required in a situation like this, in evacuating people? Now they are. That is why Pushkar Dhami. Yeah, absolutely. Now they are, because yesterday when Pushkar Dhami came around 3:30 in the evening, and then he was on the ground meeting people, trying to convince them to vacate their houses, to vacate these 2 hotels who are the major cause of worry, because they can fall any time. One hotel has tilted towards the other. So if it falls, then it is going to affect 20 to 25 houses in the vicinity. And the temperature is also dipping down. That is why one minister, Dhan Singh Rawat, is here camping. CM has left in the afternoon. He was here for almost 18 hours meeting people. He had meeting with the scientists as well, because they also know that if it starts to rain heavily, snowfall happens, it's going to get worse for administration and as well as the people for Joshimath. So now that urgency is there, but I think it is a little bit late, because people were not mentally prepared, because this land subsidence started happening on the first week of January. The cracks were there, but they started widening from first week of January. So people were not ready, mentally ready and emotionally ready for that. You can just ask them to leave their houses, but what about the memories? What about the other thing? What about the pets, the cow, the buffaloes? So this is also an aspect. So it's going to be a difficult night for everyone. That dismantling process is stopped because of rain. Then it will begin again in the morning tomorrow. Sanket.